Hello students, in our today's e-lecture, we are going to discuss the question of worksheet 4 based on Pythagoras theorem. Find the length of the diagonal of a rectangle whose sides are given to us 15 centimeter and 8 centimeter. I am drawing a figure here. It is a rectangle. We need to find the length of the diagonal. So diagonals are the line segment joining the opposite vertices DB and AC. Both are diagonals. If it is a rectangle, we know that each angle of the rectangle is 90 degree. I am not drawing the second diagonal because we have to find the length of the diagonals even. Suppose if the diagonals are given to you, both the diagonals of the rectangle are equal. You can take AC as well. If you are taking out the value of DB, the value of AC is equal to DB. So now I am just concentrating on this triangle ADAB. The measurement of the sides are given to us 15 centimeter and 8 centimeter. Opposite sides of the diagonals are rectangle are equal. Now look at this triangle DAB, which is right angle at A. So we can apply Pythagoras theorem in this. In right angled triangle DAB, if this angle is 90 degree, the side opposite to this angle is hypotenuse. It means DB is the hypotenuse. We know that Pythagoras theorem is hypotenuse square is equal to base square plus perpendicular square. Pythagoras theorem. Now hypotenuse is what? DB square. Base is AB square and perpendicular is AD square. Perpendicular is AD, base is AB and hypotenuse is DB. Now we need to find the value of DB, so it will remain as it is. AB is given to us 15 and it is also AD is given to us 8. 15 square 225 plus 8 square 64, 289. So DB square is equal to 289. Now we have to know 289 is the square of which number. By prime factorization you can find out that 289 is the square of 17. तो स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल किया and DB is 17 centimeter. Now in the question you have to find the length of the diagonals and I have told you the second diagonal is AC, that is also equal to 17 centimeter because both the diagonals of the rectangle are equal. Next question, a right angle triangle is isosceles. I am drawing one right angle triangle. If it is an isosceles, it means the sides, and the sides words are used in right angle is for base and perpendicular. I am just drawing this triangle ABC. Now the sides AB and BC, they are equal. So we are assuming let AB and BC is equal to X because their measurement are equal because the triangle is isosceles triangle. So we have taken them X, X. The value of square of hypotenuse is given to us. It is a right angle triangle. So we are going to apply Pythagoras theorem. Hypotenuse square is equal to base square plus perpendicular square. Pythagoras theorem. Hypotenuse is AC square. Base is BC square. Perpendicular is AB, that is square, AB square. Now the value of AC square is given 50. BC we have taken X, X square. AB we have taken X, X square. X square plus X square. 2X square is equal to 50. Then X square is equal to 2 यहाँ multiplier है उधर जाके बच्चे divide 25. 50 divided by 2, 25. 25 is the square of 5. Square से square cancel किया. The value of X is 5. We have taken out the length of the side. AB is equal to BC is equal to 5 meter. Next question.
The foot of a ladder is 6 meters away from a wall and its top reaches a window 8 meters above the ground. Generally जब भी बच्चा हम लेडर को प्लेस करते हैं, दिस इज इफ आई एम टेकिंग दिस एज अ वॉल, लेडर हमेशा बच्चा इस पोजीशन में प्लेस होता है. हम ऐसे ही रखते हैं ना लेडर को. ये दिस इज लेडर, ये मैं इसको एक लेडर की शेप में बना देती हूँ सो दैट द पॉइंट इज क्लियर टू यू. एक ये लेडर है, ठीक है बेटा. अब जब हम लेडर को अगर किसी वॉल पर हम अगर रखते हैं तो लेडर इज ऑलवेज इन दिस पोजीशन. द फुट ऑफ द लेडर, दिस इज द फुट, इज 6 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल. ये वॉल से 6 मीटर की दूरी पर है, ठीक है बच्चा. एंड इट्स टॉप, दिस इज द टॉप ऑफ द लेडर. It reaches a window 8 meter above the ground. That window is in the wall. वो ग्राउंड से ये यानी ये डिस्टेंस, ये वाला जो डिस्टेंस है दैट इज 8 मीटर. वॉल इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द फ्लोर. वी नो ना, वॉल बेटा सीधा स्ट्रेट होती है, ऑलवेज स्ट्रेट होती है ना सीधा, तो दैट मीन्स इट मेक्स 90 डिग्री एंगल विद द ग्राउंड. नाउ लुक एट दिस ट्रायंगल. दिस फॉर्म्स अ ट्रायंगल. It is a right angle triangle A, B, C. The side opposite to 90 degree angle AC is hypotenuse, and we have to find, now we are going to find the length of this ladder AC in right angle triangle ABC. Pythagoras theorem, we all know hypotenuse square is equal to base square plus perpendicular square. T dot means Pythagoras theorem. Now hypotenuse is what? AC square. Base is BC, तो BC square. Perpendicular is AB, that is AB square. AC square हमें find out करना है बच्चा. BC is given 6 का square, AB is 8 का square. 6 square 36, 8 square 64. तो 36 plus 64 100. 100 किसका स्क्वायर है? 10 का. तो वी स्क्वायर से स्क्वायर, तो हमने वी हैव फाइंड आउट AC इज इक्वल टू 10 मीटर. नाउ व्हाट दिस 10 मीटर इज? दिस 10 मीटर इज द लेंथ ऑफ द लेडर. नाउ नेक्स्ट, इफ लेडर इज शिफ्टेड इन सच अ वे दैट इट फुट इज 8 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल. बेटा व्हेन वी प्लेस्ड लेडर अर्लियर, उसका ये वाला डिस्टेंस 6 मीटर था, ठीक है. अब मैं आपको नेक्स्ट डायग्राम से दिखा रही हूँ कि अगर मैं उसके ये नीचे वाले डिस्टेंस को बढ़ाती हूँ, 6 की जगह अगर मैं उसको बेटा 8 करती हूँ, द लेंथ ऑफ द लेडर इज सेम. अब हमारे पास लेंथ आ गई है 10 मीटर. लेडर बड़ी नहीं होगी, लेडर तो 10 मीटर ही रहेगी ना बच्चे. बट अगर आप अपने हाथ के एक्शन से ऐसे प्लेस करके देखेंगे, व्हाट यू विल ऑब्जर्व, उसका ये वाला डिस्टेंस कम हो जाएगा. Now the length of AB is reduced because we have increased the length of BC. अगर हम उसका नीचे वाला डिस्टेंस ज्यादा कर रहे हैं तो ये वाला डिस्टेंस कम हो जाएगा. अब हमें यही बताना है in that to what height does it top T reach. अब जो लेडर है ये दिस इज लेडर. अब मैं इसको फिर दोबारा से लेडर की शेप में बना रही हूँ बच्चा, ताकि आपको वो पॉइंट क्लियर हो जाए. लेडर की लेंथ हमारे पास सेम रहेगी, लेडर बड़ी छोटी नहीं हो रही. अब हमें क्या निकालना है? ये डिस्टेंस AB. वी हैव टू फाइंड द डिस्टेंस AB. क्लियर? नाउ अगेन वी मूव इन सेम ट्रायंगल एंड वी आर गोइंग टू अप्लाई Pythagoras theorem. Now hypotenuse is same again, AC square, base is BC square and perpendicular is AB square. Now AC is given to us 10 का square, BC 8 and AB we have to find out कि इस पोजीशन में अब उसकी टॉप वॉल पर किस पॉइंट पर टच करेगी, उस पॉइंट का ग्राउंड से डिस्टेंस, दैट इज द लेंथ AB. 10 का स्क्वायर 100, 64, 100 minus 64 बचा, we have taken out that is 36. तो 36 किसका स्क्वायर है? वी ऑल नो 6 का स्क्वायर है. स्क्वायर से स्क्वायर कट गया and AB is 6. You have taken out that length. AB is equal to 6 meter. Home assignment for today. Do worksheet 4, chapter 8. Complete. You have to complete worksheet 4, chapter 8.